Good evening, children. Today we are going to continue with the chapter climate, and today I'll be teaching you the point of annual cycle of seasons. See, we have talked about, we know that India experiences four major seasons, that is hot weather seasons, cold weather seasons, advanced monsoon seasons, retreating monsoon seasons. Now, in that only, we are going to talk about, see, in hot weather season, if I talk about, as you know, that this is the summer season. Hot weather season is from March to May with rising temperature and falling air pressure. After that, Lu are strong, hot, dusty, and dry winds that blow during the day in summer over northern and northwestern part of India. See, if I talk about hot weather season, see, a distinct seasonality is of prominent character of the monsoon type of climate. The weather changes also. The weather changes also occur from one season to the other and are obvious to anyone observing it, especially in the interiors of India. See, there is not much difference in temperature can be seen in the coastal areas, but a distinct pattern is seen in the rainfall that occurs here. सिर्फ जो बारिश में होता है, जो बारिश होती है, उसमें बदलाव देखा जा सकता है. See, after that, let's talk about if I talk about hot weather, the sun's northward movement, जो sun का northward movement होता है, it causes the global heat belt to shift northwards. This causes the hot weather season in India from March to May. Remember the month? From March to May. The effect of the shifting of heat belt can be seen clearly from the temperature recordings during March-May at different stations that are located at various latitudes. The temperature is around 42 डिग्री सेल्सियस. जो टेम्परेचर होता है वो 42 डिग्री सेल्सियस में होता है अप्रैल के महीने में गुजरात में और मध्य प्रदेश में. The temperature of 48 degrees Celsius is common around May in northwestern regions of India. The moderating effect, और जो इसका moderating effect होता है उष्ण का, is very obvious when we observe the temperature in peninsular India. After that, the Deccan Plateau experiences, जो Deccan Plateau है, it experiences a temperature up to 38 degrees Celsius in around March. अगर हम लोग बात करते हैं इस टाइम नॉर्थ इंडिया की, तो जो नॉर्थ इंडिया का राइजिंग टेम्परेचर होता है, राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर occur in the summer months. Remember, in North India, rising temperature and falling air pressure occur in the summer months. अच्छा, इसका एक एक्सटेंडेड लो, यहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंडेड लो प्रेशर एरिया develops in North India by the end of May. This low pressure area extends from the Thar Desert. ये जो extend कहाँ से होता है, Thar Desert से northwest पटना के एरिया में, from the Thar Desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east to southwest. अच्छा, around this through the circulation of air begins to set in. देखो एक यूनिक फीचर होता है इस समय. A unique feature of the hot weather season in India is the Lu. The Lu are strong, hot and dry winds. जो लू होती है वो strong, hot और dry winds होती हैं that blow during the day in summer
ओवर नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्दर्न पार्ट में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये पाई जाती है। दे में इवन कंटिन्यू टिल मिडनाइट। मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम हीट स्ट्रोक्स और अदर फैटल कंसिक्वेंस। वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सो दैट्स वाई हीट स्ट्रोक्स और अदर फैटल कंसिक्वेंसेस when they are exposed to this hot winds। जब गर्म हवा में लोग निकलते हैं गर्मियों के सीज़न में तो कई सारे खतरे भी होते हैं, जैसे हीट स्ट्रोक्स हो सकती हैं और उसका नुकसान जो होता है काफ़ी भयंकर होता है। ड्यूरिंग मे द एरियाज एक्सपीरियंस डस्ट स्टॉर्म्स इन द इवनिंग। अच्छा, और जो मई के महीने में जो दीज एरियाज एक्सपीरियंस डस्ट स्टॉर्म्स। दीज डस्ट स्टॉर्म्स ब्रिंग सम रिलीफ फ्रॉम द इंटेंस। कहने को डस्ट स्टॉर्म्स होती है लेकिन थोड़ा आराम लाती हैं। ऑप्रेसिव हीट फॉर अ ब्रीफ टाइम, थोड़े समय के लिए। दे आर एकम्पनीड बाय। अच्छा, जब ये स्टॉर्म्स वगैरह आती हैं, लू वगैरह चलती है, तो उसके बाद क्या होता है? इसके बाद लाइट ड्रिजल, हल्की फुल्की बारिश, लाइट ड्रिजलिंग टेक प्लेस एंड कूल ब्रीज इन सम एरियाज। और कुछ जगह ऐसे भी होती हैं इन सम एरियाज लोकली फॉर्म्ड थंडर स्टॉर्म्स along with violent winds, torrential rainfall with hailstorms may also occur। अच्छा, अब जब समर का जो सीजन होता है, when the summer season is about to reach an end, अब जब समर सीजन खत्म होने की उस पे आता है, केरला और कर्नाटका में, जो केरला और कर्नाटका होते हैं, एक्सपीरियंस प्री मॉनसून शावर्स, मतलब मॉनसून के पहले यहाँ पे बारिश होती है। दिस शावर्स आर वाइटल इन एडिंग द राइपनिंग ऑफ द मैंगो क्रॉप्स, हेंस दे हैव अर्न द नेम ऑफ मैंगो शावर्स। अच्छा, ये जो बारिश होती है यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है, इससे जो फसल होने वाली होती है वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है फॉर द राइपनिंग ऑफ द मैंगो, तो इसीलिए इसको हम लोग मैंगो शावर्स भी कहते हैं। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज cold weather season। As you all know that cold weather season is also known by the name of winter। cold weather season हम लोग geographical terms में कहते हैं, और normally if we talk about we say winter season या ठंडी का मौसम। By mid-November the cold weather season sets in North India। Example you can see in UP itself। It prevails in the area till February। The coldest months of this seasons are December and January। जो सबसे ठंडे महीने होते हैं, the coldest months of this seasons are December and January। The temperature at this time decreases from south to north। और जो mean temperature होता है, the mean temperature is between 24 degrees Celsius and 25 degrees Celsius in Chennai। But in the northern plains, the temperature is between 10 degree and 15 degree। जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं लेकिन रातें एकदम ठंडी होती हैं। The days are mostly warm, but the nights are cold। Or if I talk about the higher regions, in the higher regions, frost is a common occurrence। Frost जो होती है वो common सी चीज़ होती है। In the winter season, the northeast trade winds। In the winter season, the northeast trade winds prevail over the country, blowing from land to sea। ये किस डायरेक्शन मूव करते, कैसे ब्लो होती है? It blows from land to sea। They cause most of India to experience a dry season। However, the coasts of Tamil Nadu receive most of its rain from these winds। जो कोस्टल एरियाज होते हैं तमिलनाडु के, उनको बारिश यहीं से मिलती है, इन्हीं विंड से इसको रेन मिलती है। As they reach here from sea to land। क्यों? क्योंकि ये जो वेव्स होती हैं, जो विंड्स होती हैं, इट रीचेस फ्रॉम सी टू लैंड, समुद्र से जमीन की तरफ जाती है। If I talk about North India, in North India a weak pressure area is developed। North India में a weak pressure area is developed। Light winds blow outwards from this region।
they are affected by the relief. These winds blow throughout the Ganga Valley from west and northwest. The fine weather in the season is marked by clear sky. अच्छा, बादल जो होता है, जो आसमान होता है, एकदम वो साफ होता है. So the fine weather in the season is marked by clear sky. लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी. यहाँ पे मौसम कैसा रहता है? लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी. जो इनफ्लो होता है, द इनफ्लो ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इज द प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. और इसको हम लोग दूसरे नाम से भी कहते हैं, नोन एज द Western disturbances. It is famous by the name of Western disturbances. These low pressure systems, these low pressure system, ये जो low pressure का system रहता है, ये start होता है Mediterranean Sea से. This low pressure system originates over the Mediterranean Sea and Western Asia. They are brought in by the westerly jet streams. और ये यहाँ पे कैसे आता है? It is being brought by the westerly jet stream. The vital winter rain required by the land is caused by these low pressure system. The winter rain falls over the plains. जो winter rain होती है, the winter rain falls over the plains and the Himalayas experience snowfall. This meager rainfall is important फॉर द राबी क्रॉप्स. और ये जो कम बारिश होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है राबी क्रॉप्स के लिए. और उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंड इज नोन लोकली एज महावत. इसको लोकल भाषा में महावत भी कहा जाता है. जो पेनिनसुलर रीजन होता है, द पेनिनसुलर रीजन हैज़ नो पर्टिकुलर विंटर सीजन. जो पेनिनसुलर वाली एरियाज होती है, उनका कोई फिक्स पर्टिकुलर विंटर सीजन नहीं होता है. देयर इज नॉट मच सीजनल चेंज. जैसे हम लोग के एरिया में जो प्लेन्स है, जैसे यूपी वगैरह में, यूपी बिहार में सीजनल चेंजेस आते रहते हैं. बट देर इज नॉट मच सीजनल चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी. नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांसिंग मानसून रेनी सीजन. द इंटेंसिटी ऑफ द लो प्रेशर कंडीशंस. Remember, the intensity of the low pressure conditions over the northwestern plains is increasing by first week of June. They are strong enough to attract the trade winds of the southern. अगर हम लोग बात करें, if I talk about advanced monsoon rainy season, अभी क्या चीज़ होती है? Let's understand this. जो एडवांस मानसून रेनी सीजन होता है, इट इज नोन एज एडवांसिंग मानसून या रेनी सीजन. द इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी होती है लो प्रेशर कंडीशंस की, द इंटेंसिटी ऑफ द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स इज इंक्रीज्ड बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून. दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू अट्रैक्ट द ट्रेड विंड्स. ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और ये अट्रैक्ट करते हैं ट्रेड विंड्स को ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर. दीज ओशियन ओरिजिनेटिंग साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, दीज ओशियन ओरिजिनेटिंग साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मूव ओवर द इंडियन ओशियन एंड क्रॉस द इक्वेटर टू फॉलो द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन. देखो, और जब ये यहाँ से गुजरते हैं, एज दे पास ओवर द इक्वेटर, जब ये इक्वेटर को क्रॉस करते हैं, एज दे पास ओवर द इक्वेटोरियल वार्म करंट्स, दे कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम. आफ्टर दैट द मॉनसून्स आर पल्सेटिंग. जो मॉनसून्स होते हैं वो पल्सेटिंग विंड्स होते हैं. द मॉनसून्स आर पल्सेटिंग विंड्स एज कंपेयर्ड, उसका हम कंपेरिजन करें टू द स्टेडी ट्रेड विंड्स से. The monsoons are pulsating winds as compared to the steady trade winds.
these strong winds these strong winds tend to blow at an average speed of 30 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो स्पीड होती है एवरेज स्पीड दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर. सी इसकी जो एवरेज स्पीड होती है क्या होती है दैट इज 30 किलोमीटर per hour. They blow over the country in a month's time. They blow over the country in a month's time, leaving only the extreme northwest. They blow over the country एक महीने में in a month's time, leaving only the extreme northwest. Violent thunder and the lightning that mark the sudden approach. सुनो, वॉयलेंट थंडर मतलब थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, एंड दैट मार्क द सडन अप्रोच ऑफ दिस. ये अप्रोच होता है सडन अप्रोच ऑफ दिस मॉइस्चर रिच विंड्स ब्रिंग ऑन व्हाट इज पॉपुलरली नोन एज द ब्रेकिंग ऑफ द मॉनसून. और उसको हम लोग जो थंडर लाइटनिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ द मॉनसून. जो साउथ वेस्ट मॉनसून होता है, the southwest monsoon that flows into India bring about a major change in its weather. वो कई सारे चेंजेस लेके आता है अपने मौसम पे. जैसा जो इंडियन पेनिनसुला होता है, जो इंडियन पेनिनसुला है, मॉनसून को ये दो ब्रांचेस में डिवाइड करता है. फर्स्ट इज द अरेबियन सी ब्रांच एंड द अदर इज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच. याद रखना पॉइंट, जो इंडियन पेनिनसुला है इट डिवाइड्स द मॉनसून इनटू टू ब्रांचेस. एक है द अरेबियन सी ब्रांच एंड द अदर इज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच. जो अरेबियन सी ब्रांच है, द अरेबियन सी ब्रांच reaches मुंबई. मुंबई तक कब तक पहुंच जाती है? द अरेबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई बाय 10th जून. 10 जून तक ये मुंबई पहुंच जाती है. जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं, द वेस्टर्न घाट्स पोज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू दिस ब्रांच ऑफ मॉनसून. हैवी रेन्स अकर ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द सह्याद्रीज. Heavy rains, याद रखना पॉइंट, heavy rains occur on the windward side of the सह्याद्रीज. फिर जो मॉनसून होता है, दिस मॉनसून ब्रांच क्रॉसेस द घाट्स एंड रीचेस द डेक्कन प्लेट्यू एंड मध्य प्रदेश वेयर इट कॉजेज सम रेनफॉल. अच्छा, जब ये मॉनसून ब्रांच जो घाट्स और रीचेस डेक्कन प्लेट्यू पर जब पहुंचता है, डेक्कन प्लेट्यू कह लो या मध्य प्रदेश कह लो, वहां पे हल्की हल्की बारिश होती है. दिस ब्रांच देन एंटर्स द गंगा प्लेन. उसके बाद जो ये वाली ब्रांच होती है अरेबियन सी ब्रांच, ये एंटर करती है गंगा प्लेन्स पे टू मीट द बे ऑफ बंगाल. जब ये गंगा प्लेन्स पे आती है तो इसका मतलब होता है इट इज गोइंग टू मीट द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. Another sub branch hits the Saurashtra Peninsula and the Kutch by mid June. अच्छा, जो दिल्ली होती है हमारी, दिल्ली receives rainfall by the 29th of June. याद रखना, मैंने दो डेट्स कही हैं बेटा. सबसे पहले मैंने कहा था द अरेबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई बाय 10 जून और उसके बाद Delhi receives rainfall by the 29th of June. As this branch passes over western Rajasthan, अभी जो ब्रांच होती है वेस्टर्न राजस्थान की तरफ मुड़ती है, it causes scanty rainfall. तो हल्की हल्की बारिश वहां पे होती है. This branch meets, ये जो ब्रांच होती है, this branch meets the Bay of Bengal branch in Punjab एंड हरियाणा टू कॉज रेन्स. ये जो ब्रांच होती है
बे ऑफ बंगाल पे मिलती है पंजाब में और हरियाणा में, और वहाँ पे वेस्टर्न हिमालयाज बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है जुलाई के पहले हफ्ते से। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोगों ने बात करी थी बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच। अब मैं बात करता हूं अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच? सी, दिस ब्रांच ऑफ मॉनसून is naturally directed towards parts of southeast Bangladesh and coastal Myanmar to be deflected later. अच्छा, ये जो डिफ्लेक्शन होता है, this deflection occurs due to the Arakan Hills along Myanmar coast. Here a major part of this monsoon branch, यहाँ पे क्या होता है, here a major part of this monsoon branch enters West Bengal and Bangladesh from south and southeast. Again I am repeating the point, this is important one. जो ये डिफ्लेक्शन होती है, this deflection occurs due to the Arakan Hills along the Myanmar coast. Here a major part of this monsoon branch एंटर्स, यहाँ पे जो मेजर पार्ट होता है मॉनसून ब्रांच का वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में एंटर होता है फ्रॉम साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, फ्रॉम टू डायरेक्शन साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शंस इट एंटर्स इनटू बंगाल एंड वेस्ट बंगाल इन बांग्लादेश. See, the next point is low temperature in northwest India causes the branch to split into two, one of which moves westwards and the other moves to the north and northeast India. The westward branch, next point है, the westward branch reaches the Punjab plains along the Ganga plains, while the other branch moves up the Brahmaputra valley to cause heavy and widespread rains in northeastern India. The relief of our country, जो relief होता है हमारी country का, the relief of our country determines the distribution of rainfall from the southwest monsoon. So we observe that the western Ghats receive a rainfall. जो western Ghats होती हैं, यहाँ पे जो rainfall होती है, this rainfall is of over 250 centimeter. On the other hand, less than 50 centimeter of the rain is recorded on the leeward side of the Ghats. Similarly, the hills and the mountain ranges causes heavy rainfall in the northeastern states. जो northern plains होते हैं, the northern plains experience decreased rainfall as one moves westward at this time of the season. ये जो मौसम होता है, सीजन जो होता है इस समय, at this time of the season, कोलकाता को 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर ऑफ रेन रिसीव होती है, वाइल पटना, दूसरी तरफ पटना हो, इलाहाबाद हो, दिल्ली हो, इनको मिलता है 102 सेंटीमीटर. Just try to understand. Kolkata receives 120 centimeter of rain, Patna 102 centimeter, Allahabad 91 centimeter, and Delhi receives 56 centimeter of rain respectively. In all these areas, enough rain occurs. The increasing distance from the sea, जो increasing distance होता है from the sea, causes the decline in the rainfall. The increasing distance from the sea causes the decline in the rainfall. The monsoon tends to have, the monsoon, जो monsoon होता है, the monsoon
tends to have breaks in its rainfall. देखो ऐसा नहीं है कि बारिश होती है तो लगातार स्टार्ट हो जाती है. The monsoon tends to have breaks in its rainfall, which causes wet and dry spells. इसका मतलब समझना, which causes wet and dry spells. कई बार बारिश ज़्यादा होती है, कुछ और थोड़ी बस बहुत लिमिटेड बारिश होती है, so that's why it is known as wet and dry spells. This means that monsoon rains occur only a few days at a time. इसका मतलब याद रखना, this means that monsoon rains occur only a few days at a time. Rainless dry spells occur in between. देखो कुछ मानसून में कुछ समय तक बारिश नहीं होती, वो ड्राई स्पेल्स होते हैं मानसून के बीच में. दिस फिनोमिना, ये जो मेथड होता है, दिस फिनोमिना इज ड्यू टू द फ्रीक्वेंट एंड स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल डिप्रेशन. ये क्यों होता है? दिस फिनोमिना इज ड्यू टू द फ्रीक्वेंट एंड स्ट्रॉन्ग tropical depression formed at the head of the Bay of Bengal. They cross over the mainland. ये कहाँ से चलते हैं? Formed at the head of Bay of Bengal, they cross over the mainland. The depressions follow the axis of the monsoon trough of the low pressure. अच्छा, कई सारे कारण होते हैं. ड्यू टू डिफरेंट कॉजेस द ट्रॉग एंड इट्स एक्सिस कीप मूविंग टू द नॉर्थ और साउथ, विच इन टर्न डिसाइड्स ऑन द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. व्हेन द एक्सिस ऑफ द मॉनसून ट्रॉग इज ओवर, जो एक्सिस होता है, व्हेन द एक्सिस ऑफ द मॉनसून ट्रॉग इज ओवर, द प्लेन्स, the region receives ample rainfall. तो इस जगह पे काफी अच्छी बारिश होती है. In plains, the region receives ample means enough rainfall. But if there is a shift in the axis, लेकिन अगर axis में shifting हो जाती है, but if there is a shift in the axis and it moves closer to the Himalayas, और अगर ये closer to the Himalayas आता है, then an increase in dry spells is observed. तो dry spells means rainless monsoon is observed, and these dry spells also last longer than other times. और जो dry spells होते हैं, इनका जो ड्यूरेशन होता है वो काफी लंबा हो जाता है. Widespread rainfall occurs in the mountainous catchment areas of the Himalayan rivers. These heavy rainfall herald, ये जो heavy rainfall होता है, इसका क्या होता है, फिर इससे flood आते हैं. This heavy rainfall herald floods that devastate the lands, leading to huge loss of life and property in the plain regions. Uncertainty and changes are characteristics of the monsoon. देखो मानसून की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? ये अनसर्टेन होता है, कुछ पता नहीं कब क्या होगा और कब मानसून बदल जाएगा. यही मानसून के कैरेक्टरिस्टिक्स है. 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं. द फर्स्ट वन इज द अनसर्टेनिटी एंड द अदर इज द अनसर्टेनिटी, एक हो गया, और दूसरा है चेंजेस. इसमें चेंजेस कभी भी हो जाते हैं. द alternation of dry and wet spells varies in intensity, frequency, and in duration. They bring heavy rains in one part. And cause droughts in other area. तो इसमें होता क्या है? एक जगह खूब बारिश हुई है, कुछ स्टेट्स में खूब बारिश होती है, कुछ स्टेट्स जो हमारे इंडिया के होते हैं वहां पे सूखा पड़ जाता है. They bring heavy rains in one part and cause droughts in other areas. एक तरफ बाढ़, एक तरफ सूखा, या एक तरफ खूब बारिश, एक तरफ एकदम बारिश नहीं. Their irregular arrival, remember this point, their irregular arrival
and retreat disrupt the farming schedule of most of the Indian farmers. My next point is retreating monsoon, the transition season. See, जो monsoon trough होता है, the monsoon trough of the low pressure grows weaker by October November. जो अक्टूबर नवंबर का मंथ होता है इसमें जो मानसून ट्रफ होती है लो प्रेशर ये घटता जाता है. It is then slowly replaced by high pressure. इसको फिर क्या चीज रिप्लेस करती है? It is then slowly replaced by high pressure. The monsoon's outreach is rendered unsustainable and the gradual withdrawal begins. This is known as the retreat of monsoon. इसे कहा जाता है retreat of monsoon. By this time, October begins the monsoon. और जब ये मौसम आता है, by this time, October begins the monsoons withdraw from the northern plains. और वो withdraw कर लेता है northern plains से. जो ये period of transition होता है, transition means change. The period of transition from hot and rainy to dry and cold season occurs in the months of October to November. Clear skies and rising temperature are prominent marks of retreating monsoon. Remember the point? Clear skies and rising temperature are prominent marks of retreating monsoon. During the daytime, the temperature remains high, but nights are pleasant and cool. The land remains moist. जो लैंड होता है वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है. The land remains moist. High temperature and humidity cause the daytime weather to become rather oppressive, known as October heat. इसको किस नाम से हम जानते हैं? It is known as the October heat. Again, I am explaining this point. The land जो high temperature होता है, high temperature and humidity, the combination of high temperature and humidity cause the daytime weather to become rather oppressive, known as October heat. This phenomena of early October is replaced in late October. शुरुआत में हाई टेम्परेचर होता है, अक्टूबर हीट होती है. इसको रिप्लेस करते हैं लेट अक्टूबर में बाय लो टेम्परेचर. रिमेंबर द पॉइंट, अक्टूबर में टेम्परेचर शुरुआत में ज़्यादा रहता है और ये रिट्रीट करता है. इसको रिप्लेस करते हैं लेट अक्टूबर बाय लो टेम्परेचर, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में. जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, द नॉर्थ वेस्टर्न इंडियाज लो प्रेशर conditions move to the Bay of Bengal area. The northwestern India's low pressure conditions move to the Bay of Bengal area by early November. This shift is caused due to cyclonic depressions that occur with their origins over the Andaman Sea. Those depressions that are able to cross the eastern coasts of India cause heavy rains. The destruction, or you can say the destructive tropical cyclones, strike the thickly populated areas in the Godavari, Krishna and Kaveri. You should be remembering the name of the three rivers, Godavari, Krishna and the Kaveri deltas. Loss of lives and properties are on a large scale. Loss of lives and properties are on a large scale. These cyclones may also arrive in Odisha, West Bengal and Bangladesh coasts. Most of the rainfall of the Coromandel coast is a consequence
of the depressions and cyclones. Now children, let me ask you certain questions. Certain questions. Certain questions I would be asking you. You have to mention the answer. Anushka and Archika, both are ready. So children, my first question is Lu. Define Lu. What do you mean by Lu? Just define it. Anushka and Archika, define Lu, or what do you mean by Lu? Now, let me give you the answer. The answer for Lu is, okay, Anushka, your answer is temporary summer wind which blows mostly in afternoon. Right answer? Okay. In other form, if I give the answer, your answer is right. I'm just changing the words. A strong, dusty, gusty, hot and dry summer wind from the west which blows over the western Indo-Gangetic plain region of North India and Pakistan. That is known as Lu. Okay, nice answer. Now the next question. Define mango showers. Define mango showers. Archika, you are also supposed to give the answer. Okay, this question is a bit difficult. I have asked you to define mango showers. I will tell you. Send your answer fast, children. Now, the word mango showers. See, heavy showers often accompanied by thunder that occur in Kerala and coastal areas of Karnataka in the pre-monsoon period, that is from March to May. They are known as mango showers since they help in the early ripening of mangoes. So that's why they are known as mango showers. Next question. What do you mean by what do you mean by tropical depressions? Let's answer this. What do you mean by tropical depressions? Yes, Anushka and Archika, answer it. Tropical depressions.
Now define that answer which I have asked you. Tropical depressions. Now I am going to tell you this answer. Tropical depressions okay, an atmospheric low pressure system. An atmospheric low pressure system originating in the tropics is specifically a tropical cyclone in which the maximum sustained wind speed is 39 miles per hour, that is 62 kilometers per hour or less. Now the next question, what do you mean by retreating monsoon? Retreating. Monsoon. Define this. Retreating monsoon. That's the last question for today. Define retreating monsoon. Now children, the answer for this question is the retreat of monsoon takes place due to the migration of sun towards the south and the withdrawal of the southwest monsoon from peninsular India. That is known as retreating monsoon. Again, I am explaining. The retreat of monsoon takes place due to the migration of sun towards the south and the withdrawal of the southwest monsoon from peninsular India. Okay, that's all for today. And in the next class, I'll be starting from distribution of precipitation. My topic would be distribution of precipitation. So by this manner, our chapter would be finished up in the next class.